बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज का जो लेसन है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कंसीडर अ स्टोन शोन इन द फिगर tied to a string moving in a circle. The necessary centripetal force act on the stone through the string that keeps it to move in the circle. According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to the centripetal force, centripetal reaction that pulls the string outwards to something is called the centrifugal force. 9th class centrifugal force is a force in the reaction of centripetal force. Suppose we have a stone tied with a string. We revolve it in a circle. We provide with our hands the centripetal force we provide with the hands to revolve in the circle. It is an action. We know that there is reaction. There is always a reaction of an action. Therefore, so a force produced that is outwards from the circle, which is called centrifugal force, which this force applied to our hands outwards from the center of the circle. This force is called centripetal force. उर्दू मीडियम में वाली बुक में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ना ये दिया गया ये क्वेश्चन। फ़र्ज़ करना है कि हमने एक पत्थर को एक डोरी के साथ बांधा है और उसको एक सर्कल के अंदर घुमाया जा रहा है। उसको घुमाने के लिए ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा हाथ जो है वो फराहम करता है, जिसकी वजह से पत्थर जो है वो उस सर्कल के अंदर घूमता रहता है। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक चूँकि हर एक अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है, यहाँ पे अमल ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक यहाँ पे एक्शन है, तो उसके रिएक्शन के तौर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो पैदा होती है, जो कि दायरे के सेंटर से बाहर की तरफ हरकत करती है। तो दायरे के सेंटर से बाहर की तरफ ये जो फोर्स हरकत कर अमल में आती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 9th क्लास इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इसका आंसर इंग्लिश मीडियम की बुक की पेज नंबर 78 पे है। उर्दू में इस क्वेश्चन को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो उर्दू मीडियम की बुक पे भी पेज नंबर 78 पे इसका आंसर है। इंग्लिश मीडियम की बुक पे पेज नंबर 78 पे यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो निशान लगा हुआ है ये इसका आंसर है, और उर्दू मीडियम की बुक पर 78 पेज पर यहाँ से लेकर ये निशान लगा यहाँ तक इसका आंसर है। तो ये आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। First, look at this activity. Students tie a small piece of stone with a string about 1 meter long. Hold the string tightly in your hand and rotate it. What do you feel? Do you have to apply the force? Does the stone try to pull your hand away? Your hand should exert a continuous force on the stone to maintain the rotation of the stone in the same circle. This force, which is exerted by the hand on pulling stone towards the center, is centripetal force. Hence, when a body moves in a circular path, the force which acts towards the center is called centripetal force. You will also observe that the stone is exerting a force,
which tries to pull itself away from the center of the circle, that is, away from your hand. This force is the centrifugal force. Similarly, when a body moves in a circular path, the force that acts away from the center is called centrifugal force. While cycling in a bend or a curved path, a cyclist experiences a centripetal force, due to which the cyclist bends inwards. When a bus is moving in the bends, the passengers experience centrifugal force. Due to this force, the passengers bend away from the center of a turn or curve. Students, have you seen a magnet? A magnet exerts force to attract metals like iron, cobalt, and nickel. This pulling, which is exerted by the magnet on the iron, cobalt, or nickel, is called magnetic force.